Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you will be in good mood and in best state of your health. As we have read in our previous lesson regarding the direct and indirect speech, and in previous lesson we have read also how we will change direct into indirect speech, and we have read the first rule regarding the pronouns, how we will change the pronouns when we are going to change direct into indirect speech. And we have seen in previous lesson how if the reporting verb is in present tense and reported speech is also in present tense, how the tense of the reported speech or how it changes when we will change it from direct speech to indirect speech. Now, so far as today's lesson is concerned, we will see rule number 2. Rule number 2. Rule number 2 is if the reporting verb is in past tense. Previous lesson में हमने देखा था present tense. Now if it is in past tense and the reported speech is in present tense or future tense, तो फिर क्या होता है जब हम चेंज करेंगे the tense of the reported speech changes into its corresponding past tense. यानी अगर आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो होगा इट विल चेंज इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस अगर ये प्रेजेंट में है रिपोर्टेड स्पीच और फ्यूचर में. फॉर एग्जांपल इफ इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट रादर वी कैन से प्रेजेंट सिंपल. तो ये इसको क्या ये किसमें चेंज हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट. ये हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं. अगर वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा इट विल चेंज इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस दैट इज पास्ट इंडेफिनिट. अगर इफ इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस इट विल चेंज इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस. Now, if the reported speech is in present perfect, it will become past perfect. अब अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो it will change into past perfect continuous. So you have to remember this rule. If the reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech changes into its corresponding past tense. That is present indefinite becomes past indefinite, present continuous becomes past continuous, present perfect becomes past perfect, and present perfect continuous becomes past perfect continuous. Okay? And अगर वहां पे होगा if it is can will become could, shall होगा shall will become should, may will become might, whereas may will become might, shall will become should, can will become could. Okay. Now, I will give you some example.
रूल आपने याद रखा, if the tense of the reported speech is in past tense and the tense of the reporting verb is, if it is in past tense, the tense of the reported speech will change into its corresponding past tense. You have to remember it. Now example है, for example, he said, आपको मैंने परसों बताया, this part is known as reporting verb. He said, comma, inverted commas begin. I go to school. I go to school, commas close. Now, dear students, please see. He said, this is reporting verb and this is in past tense because the verb is in second form of the verb. Said, say की second form है said. So that means this reporting verb is in past tense. And the tense of the reported speech, I go to school. Here it is go, it is first form of verb. It is present tense. It is present simple, rather we can say present indefinite. Now, how we will change it now? आपको पता है, हमने पढ़ा है कि जब हम इसको चेंज करते हैं indirect speech में, these inverted commas are removed and conjunction that is used. Okay? Now we will see. He said that. तो प्रोनाउन के बारे में आपने पढ़ा है परसों इन प्रीवियस लेसन. आई हैव टोल्ड यू हाउ दीज चेंजेस. इफ इट इज फर्स्ट पर्सन, it changes according to subject. If it is second person here subject, it changes according to the object. While as if it is third person here, it remains unchanged. जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दी है SON. वो बहुत आसान याद रखना है. S फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यहाँ लिखेंगे. That means first person changes according to subject. S second person changes according to object. O third person no change. M no change. ये आपने याद रखना है. This is very much simple. You can remember it. Now he said that. Now here it is first person. जो हमने रूल पढ़ा है, first person changes according to subject. Subject is here he. So he. Now we will go to the tense. He go to school. It is present indefinite, but the reported verb is in past tense. So हमने भी रूल पढ़ा. If it is in past tense, the tense of the reported speech changes into its corresponding past tense. That means if it is present indefinite, it will become past indefinite. Okay. Now क्या बन जाएगा? He said that he. Go की second form क्या है? Went. He went to school. Okay. Now it is present indefinite. अब हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, I said to him, comma, inverted comma, start. I said to him, you are singing a song. Full stop, commas, close. This is direct speech. Now we will change it to it is indirect speech. So I said to him. मैंने आपको परसों बताया, प्रीवियस लेसन में बताया आपको, said to say, अगर said to होगा it will become tell, अगर says to होगा it will become tells, अगर said to होगा it will become told. Okay? Now it is said to, so I told him. तो that आपको पता है that. Now it is you. You is second person. So second person changed according to object. What is object here? I said to him. So him is object. What will be? It is subjective case. क्योंकि यहाँ पर हमने जो pronoun है वो as a subject लिखना है. तो him का subject case क्या बन जाएगा? Subject case बन जाएगा him का he. So I told him that he. तो tense क्या है यहाँ पे? You are singing a song. So it is present continuous. So present continuous changed into it is corresponding past tense, that is past continuous. So I told him that he was singing a song. Because now जो सब्जेक्ट है इट इज इन सिंगुलर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर में आएगा. तो यहाँ पर और आया था, लेकिन यहाँ पे इसका पास्ट बन जाएगा सिंगुलर में was. So सेंटेंस क्या बन जाएगा? I told him that he was singing a song. So this is present indefinite becomes past indefinite. Now जो दूसरा सेंटेंस हमने किया present continuous becomes past continuous. Now let's see another example. The teacher said, comma, inverted commas begin.
he has done his homework. Full stop, commas, close. Now the teacher said he has done his homework. So what is reporting verb? It is in past because it is said. तो क्या बन जाएगा? The teacher said. The teacher said. ये reporting verb है. It is in past. तो it changes into it is अगर tense शब्द जो होगा reported speech का, it will change into it is corresponding past tense. So the teacher said that he. Now pronoun is here he. Which person it is? हाँ, is third person singular. तो third person हमने देखा है there फॉर्मूला में n इसके नीचे आता है, n means no change. So there will be no change in third person जो होगा वो उसमें change नहीं होगी. The teacher said that he. हाँ, now the tense, we will see the tense. He has done his homework. That means it is present perfect. Present perfect. Present perfect change into its corresponding past tense. That is past perfect. It will become past perfect. The teacher said that he. What is the past of has? Had. Both have and has. दोनों का past had है. So the teacher said that he had done. Third form of the verb. Past perfect के साथ third form of verb आती है. The teacher said that he had done his. यहाँ पे फिर third person singular, third person है, third person remains unchanged. तो his आएगा his homework. Okay, dear students, do you got it? Thank you. Now, this is हमने किया present indefinite, how it changes, present continuous, how it changes, and present perfect, how it changes. Now, the fourth one is present perfect. For example, my mother said to me, comma, you have been washing your clothes. Full stop, commas, close. My mother said to me, reporting verb, you have been washing your clothes. So this is present perfect continuous. This is present perfect continuous. The tense of the reported speech जो है, it is in present perfect continuous. Now how we will change into it is indirect speech. देखिए, my mother said to me. My mother said to me. Said to means it will become told. Said to. Told me that you. फिर यहाँ पे सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स किसको एड्रेस किया गया है? माई मदर सेड टू मी फर्स्ट पर्सन को एड्रेस किया गया है. सो नाउ व्हाट विल बी इज द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ मी इन फर्स्ट पर्सन. जब हम मी को एज सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट विल बिकम आई. ओके, माई मदर टोल्ड मी दैट आई have been washing your clothes. Have been washing. So it is present perfect continuous. So it will change into past perfect continuous. Have जो है, what is the past of have? It is had. It is had. So I had been washing. Your. Here it is also second person. Second person change according to object. It is me. Now it will change into this possessive case. Your का बन जाएगा my clothes. Full stop. अब इसमें inverted commas नहीं आते जैसा कि मैंने आपको last lesson में बताया. So this is the way how we will change if the tense of the reporting verb is in past tense. How the tense of the reported speech changes. How the tense of the reported speech changes. Okay. So dear students, let us recapitulate. हमने आज क्या पढ़ा? हमने देखा the tense
ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब जो है इट चेंज इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। अगर यहाँ पे पास्ट होगा तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इट चेंज इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। दैट मींस प्रेजेंट बिकम्स पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। तो एक और एक्सेप्शन टू दिस रूल है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच जो होगा इट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ or actual fact means permanent fact, ठीक, then the tense of the reported speech remains unchanged। तो फिर रिपोर्टेड टेंस और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल यानी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यहाँ परमानेंट फैक्ट होगा जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो फैक्ट होगा परमानेंट फैक्ट वो उसमें चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल द टीचर सेड, the teacher said, comma, inverted commas begin, honesty is the best policy, honesty is the best policy। हाँ, दिस इज परमानेंट फैक्ट है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां पर चेंज नहीं होगा। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल, जो हमने अभी रूल पढ़ा उसकी एक्सेप्शंस हैं ये, उसमें ये अप्लाई नहीं होता है वो रूल यहाँ पे वेयर देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट फैक्ट रादर यू कैन से। फॉर एग्जांपल द टीचर, तो ये ऐसा क्या बन जाएगा, द टीचर सेड दैट, हाँ यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये वहीं ऐसा ही रहेगा। सो यहाँ पर चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज एक्सेप्शन ऑफ दैट रूल। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, यहाँ अगर हम एक और एग्जांपल देंगे ऐसा, फॉर एग्जांपल ही सेड, comma, inverted commas begin, iron is the one of the useful metal। आयरन इज द वन ऑफ द यूजफुल मेटल। अगर वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पर होती है किसी चीज की, वो भी वहां पर चेंज नहीं होता है, उस पर वो रूल अप्लाई नहीं होता है, वहां पर भी वो मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज, उसकी टेंस में चेंज नहीं होती है। तो ये भी रहेगा ऐसे ही सेड दैट आयरन is one of the useful metal। तो these are the exceptions to this rule जो हमने पढ़ा। if the reporting verb is in present tense, past tense, the tense of the reported speech is in present or future, that it changes into its corresponding past tense। हाँ, अगर किसी भी जगह can होगा या will होगा तो can will become could, और will become would। तो इसी तरह may अगर होगा it will become might, और इसी तरह अगर क्या है मतलब shall होगा it will become should। You have to remember this rule। So today I think this is enough। तो आज आप घर पे इसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस इसकी करेंगे, जितने और सेंटेंस आप बनाएंगे, तो ये रूल को याद रखकर फिर यही रूल अप्लाई करेंगे। बाकी सेंटेंस आप यू कैन कंसल्ट योर ग्रामर एट योर होम, तो वहां पर आप ये मजीद जो सेंटेंस हैं उनको लेंगे, तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल गेट थ्रू इंशाल्लाह। और आपका ये जो मतलब ये रूल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और एक रूल है, अगर आप दोनों पास्ट में होंगे तो उस पर क्या अप्लाई हो, कैसे अप्लाई होता है, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड बेटर टुडे एंड आप यहां से जाकर घर में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट बेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। स्टे इनडोर्स, स्टे सेफ। Thank you for your cooperation. May God bless you. Thank you very much.